to be here? बहुत देर बाद मैं इंडिया आया हूँ and I feel amazing. I just came a few months back, a few hours to host एक event. but बहुत मजा आया. मीठी मीठी धूप है बिल्कुल. मैंने अभी रास्ते में काली गाजर खाई दबा के. मेरे लिए दिल्ली का मतलब बिल्कुल because it has almost overlap of Punjab, Amritsar. So this is almost like home. I'm just heading home to charge my दिमाग की battery with my mom. But this stop is very important. And congratulations, you recently won an award also. How does it feel to receive such an honor? I feel it was high time Indian food took to the mainstream on this scale. It's also very important that Indian cuisine shines through this. It's very important. Of course, we have a lot of no-sayers, especially हमारी अपनी community में ही होते हैं इतने. But I feel that there's nothing stopping Indian food to be one of the most influential impressions in America. You launched before only, and we saw presence of great dignitaries at your restaurant, and I would say Shah Rukh Khan was there. What was that meeting? You said like you cried like a child. I really want to know. So a restaurant with such high reservation, so I told Shah Rukh that मैं खाना होटल भेज देता हूँ आपके. But he's saying I've come for this, and he came to the restaurant. For me, it's so important that the people who are in the position of influence, they respect culinary arts and chefs. जैसे बाहर की countries में होता है. I feel that India still has a long way to go, but still we are on the right track. I feel that Shah Rukh telling me that for me, Bungalow represents his heritage, his parents. This represents our ancestors. It was a big deal. और मैंने ऊपर देखा, जो ग्लास का रेस्टोरेंट है, ऊपर देखा चांद निकला हुआ था. तो मेरे को दिल वाले का वो मोमेंट याद आ गया. देखो देखो सिमरन चांद निकला था. You know, I've known him for decades. It's important for them to come together because they bring in a lot of influence, and also they bring in so much of gratitude that you represent a country single-handedly in so many ways to the Western world. I want putting Indian cuisine on global map. What's the secret recipe? If you want. बहुत शेफ्स कह रहे हैं, मुझे क्रेडिट मिलता है, पर बहुत सारे शेफ्स हैं from Chintan to Srijit to Vijay to I just can't even name. There's so many Indian chefs who have made this change in America, and I do feel that I am with them. I'm not separate. I'm not on the shoulders. We are standing together, very strong with each other. Page of social media. I really want to ask you how food industry has evolved. I think इस टाइम पे जो भी है प्रमोशन सोशल मीडिया ही है. आपकी जो आप रिव्यूज पढ़ते हैं सोशल मीडिया ही है. आप जो रेस्टोरेंट का इम्प्रेशन है सोशल मीडिया ही है. Everybody has right for their opinion. Some people use it well. Some people totally misuse the system. So many people use to pull up the cuisine and others. Most of the people use it to push it down. But I focus the people who let everyone rise. Chef, you are like I've worn so many hats. You are a filmmaker also. What we can expect in terms of films? 2025, my biggest movie comes out with Shabana Azmi and A.R. Rahman. It's called Imaginary Rain. It's my greatest work till date. I feel it's a story of a failed chef in New York and how she's pushed so hard, and how she comes to India to reinvent her life for redemption. It's one of my greatest works ever. Looking forward to it. Before wrapping up, one final question. I'm from Delhi and we would love to see your restaurant here. Like, can we expect? Bungalow is my last restaurant when I'm cooking 16-18 hours a day. I'm in the restaurant all the time. It's my last tribute. I've been cooking for over 40 years. And by the time I finish this project, I'll be 15. And I'll use my energy to create something even more different, more not just this was my sister's dream. This was not even my dream. So answer is no. So I have to come. अबे क्यों नहीं? ये बहुत बार मुझे सवाल पूछा जाता है कि आप इंडिया में खोलने में. कहता हूँ एनर्जी जो होती है रेस्टोरेंट में वो होती है जब आप खुद खड़े होते हैं. एंड बहुत ज़रूरी है कि एक फॉरेन लैंड में द मोस्ट कंपेरेटिव मार्केट ऑन द प्लैनेट अर्थ, देयर इज नोबडी यू कैन डिनाई द पावर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, दैट उसके अंदर एक हिंदुस्तान का झंडा पकड़ा हुआ है. एंड दैट इज समथिंग विच हैज मोर longevity. I feel
that it uplifts the cuisine and currency and turns it into not just your economy, it increases the currency of the cuisine. At this stage, I've learned the difference. कभी-कभी हम घर में कुछ भी बनाते हैं and the coat पूरा चढ़ता नहीं उसके ऊपर. You must have noticed. कभी हमने कुछ चिपक जाए. तो ये प्राइमर चल रहा है अभी, क्योंकि असली पेंट ये है. उसके बाद हमने एक स्लरी बनाई हुई है मैदे की और कॉर्नस्टार्च की. उसमें हमने इसको डिप किया. That's why we had to Take this. We crumble the whole thing. एक एब्सोल्युटली न्यू विजन ऑफ अ डिश कर लिया. अभी से फ्राई कर सकते हैं. और मैंने नोट किया है कि एयर फ्रायर में दिस वर्क्स इवन बेटर. बिल्कुल आपके सामने वाला. अगर मैं चाहती हूँ, अगर आप स्किप करते हो स्टेप ये वाला पहले 2 का, तो कभी भी चिपकेगा नहीं. उसके बाद दिस इज नाउ टेल मी परफेक्ट कोटिंग. एंड जब फ्राई करेंगे हम इसको, तो यू कैन इमेजिन कि बाहर से एक क्रंच आएगा लेस के मसाला वेफर्स का. करेंगे इसको और साथ में हम सर्व करेंगे पाइनएप्पल का एक अचार. बड़ी अपॉर्चुनिटी आज दी है मेरे को भगवान ने टू रिप्रेजेंट द क्यूजीन. आई डोंट वांट टू टेक इट लाइटली. एंड जस्ट द सिंपलेस्ट इवन डिशेज फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया. अभी जो आप खा रहे हैं वो सिर्फ आलू की चाट है, बट उसी में ही जिन्होंने मेरे को देखा हुआ काम करते हो, मेरे को ऑब्सेशन है प्रिसीजन का. तो फाइनली अरे और टॉप रेस्टोरेंट इन द कंट्री इज अ देसी रेस्टोरेंट. बिल्कुल करारे आलू. इसलिए आपको मैजिक इसमें आएगा. वो व्हेन यू टेस्ट दैट यू फील दैट यूजिंग ब्रेड. It is just incredible. What do you do that you turn